नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्टामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का ये जो पर्टिकुलर विषय है यहाँ पे, वो कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ रूमर अभी उड़ाई जा रही है, वो दूर करने के लिए हमने एक प्रयत्न छोटा सा किया हुआ है स्टूडेंट इंटरव्यू का, जो कि आज हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अंचित है जो स्टूडेंट का इंटरव्यू लेंगे। हमने कुछ क्वेश्चनरी तैयार किए अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसको पूछेंगे, और जो स्टूडेंट के डाउट्स है और पेरेंट्स के जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। आज यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट है हमारे आयुष ब्रह्मभट्ट करके, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, और साथ में जो इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे जो कलीग है डॉक्टर अंचित है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने के लिए थोड़ा प्रयत्न करेंगे। एक एग्जिस्टिंग डॉक्टर है, जो डॉक्टर है बाकायदा अभी, और जो फ्यूचर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, दोनों टर्म्स में दोनों डॉक्टर है। तो डॉक्टर डिस्कशन विद डॉक्टर। Good evening, Ayush. Good evening, Hope sir. everything is going well. Yes, sir. Everything is going well. So where are you right now? So right now I'm at my home in Ahmedabad. Okay. So please tell us something about yourself. कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, आप कहाँ पढ़ते हैं? Sir, my name is Ayush and I'm basically from Gujarat city, Ahmedabad. Right now मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है, तो यूनिवर्सिटी से हमको जो टीम्स ऐप पे प्रोवाइड करते हैं स्टडीज, तो मैं अभी ऑनलाइन स्टडीज वो सब कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो भी हमको सीनियर्स या जो मेरे मेंटर्स वो सब मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुमको ये पढ़ना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर बुक एंड वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को अभी मैं अपने बेसिस में अपने आप कर रहा हूँ घर पर ही। ओके। सो आप अभी अकेले हैं कि कोई और भी है आपके साथ अभी यहाँ पे? अभी मेरे साथ मेरे पापा बैठे हैं। ओके, कैन यू प्लीज? गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? बस फाइन। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू सर? बस फाइन, एकदम बढ़िया। आप बताइए सर। सर एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ये जस्ट एक छोटा सा इंटरव्यू हम कंडक्ट कर रहे हैं आयुष का, इन रेफरेंस टू कजान फेडरल यूनिवर्सिटी ऑन स्टूडेंट्स डिमांड। बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन हर पेरेंट्स के माइंड में, हर बच्चे के माइंड में होती है कि भाई क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्या क्या तरीकों से गुमराह किया जाता है बच्चों को। तो उस चीज को और उस परसेप्शन को थोड़ा दूर करने के लिए और एक क्लियर विजन देने के लिए बच्चों को कि हाँ दिस इज गुड फॉर यू और दिस इज नॉट गुड फॉर यू, इसी के लिए एक ये छोटा सा वेबिनार कम इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज आयुष से थोड़ा बात करना चाहूंगा, एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आई विश आस्क फ्रॉम आयुष। आयुष, जैसे आप कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ रहे हैं, राइट? सो दिस इज योर सेकेंड ईयर, आपका सेकेंड ईयर अभी सिर्फ शुरू हुआ है, एंड वी ऑल नो कि कोविड सिचुएशन पूरे इंडिया में चल रहा है, प्लस रशिया में भी है। हाँ, उस पैमाने पे नहीं है बट एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी। सो आप अभी वापस तो आप जा नहीं पा रहे, तो आप सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। Yes, sir. तो मुझे आपके कुछ क्लियर व्यूज चाहिए फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या एक्सपीरियंस किया और वो क्या क्या रियलिटी हुई इन रेफरेंस टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई क्वेश्चन इज कि जैसे ये यूनिवर्सिटी, दिस मेडिकल स्कूल कजान फेडरल यूनिवर्सिटी जो है, इसका ये जो MBBS प्रोग्राम है, क्या यही सिर्फ एक इकलौता प्रोग्राम है जिसके लिए यूनिवर्सिटी जानी जाती है, या फिर और भी इसमें कुछ ऐसा है जिसके लिए यूनिवर्सिटी जानी जाती है? नो सर, बेसिकली कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, इंक्लूडिंग एवरी फील्ड विच इज स्टडी इन द वर्ल्ड। बट मेडिसिन कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का एक वन ऑफ द अच्छा, and we can consider it as a special program which is conducted by Kazan Federal University for the medical students. Okay. And जैसे आप, मैं आपसे पहले मैंने बात करी है इस रिगार्ड में, और हमने एक अच्छा डिस्कशन किया था इसके ऊपर, बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट जो बात करना पसंद करता है इन टॉपिक्स पे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ का करिकुलम है MBBS कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का, ये कितना इंटीग्रेटेड है, और कितना आपको, क्या ऑब्जर्वेशन आपकी रही पूरे साल में जिस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स मिले आपको? सर, बेसिकली कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का 6 ईयर मेडिकल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। एवरी ईयर हमारे 2 to 3 एक मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसकी बेसिस पे हमारे प्रैक्टिकल्स एंड एवरीथिंग कंडक्ट करते यूनिवर्सिटी। ओके। तो ये जो 6 साल का प्रोग्राम है, ये एब्सोल्युटली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है या फिर इसमें रशियन भी इन्वॉल्वमेंट है? No sir, basically Kazan Federal University का medical program is in English language, but only when we have to interact with all the patients and all in clinics, and there we have to use Russian language.
but while we are speaking in Russian language in our first, second and third course, they are teaching us Russian and they help us a lot for learning the Russian language throughout. ओके 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 एंड वन मोर थिंग, जैसे आपने कहा कि हर साल आपके 2 से 3 मेजर सब्जेक्ट्स होता है, कैन अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, राइट? प्रैक्टिकल्स के साथ साथ आपके इसमें क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, और क्या कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है इसके साथ आपका? Yes, sir. Basically, particularly if I am saying about first year, like in first year we have anatomy and histology, both the subject. So I am considering anatomy. For anatomy, basically every week we have one class and one lecture. So in the lecture they will teach us in a particular like project and all the things. And during the class they are teaching us in a 3D simulation in a projector and also with some anatomical models and all that things. Then sir teaches every topic slowly, and then if we have particular doubts, then sir takes us to the library. We have contained lots of models of anatomy including each and every part of our body. So particularly जब हमको कोई भी टॉपिक समझ ना होता, लाइक हम बोन की बात करें and we have to study the bone of leg, that is femur, तो सर हमको particularly femur हाथ में देते and then sir teach us all the topics of the femur including each and every single line and a single dot of the femur, वो सर हमको समझाते. And after end of first year for anatomy, so we have some particular internship program for around 15 to 20 days which we have to complete, and after that we get one paper, or we can do that internship in India also, but we have to show particular internship program to the university that we have completed this internship program in my country and this is the paper from the doctor. ओके सर, एंड वन मोर थिंग दैट इज स्टिल रिवॉल्विंग इन माय माइंड कि आप स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट आप लेक्चर्स भी अटेंड करते होंगे, तो वहाँ लेक्चर्स का क्या फ्रेमवर्क रहता है? उसके लिए उन्होंने क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं आपके लेक्चर्स के लिए? ये लेक्चर्स कहाँ कंडक्ट किए जाते हैं और इनकी प्लानिंग कैसे होती है पूरी? Sir, particularly हमारे lectures में we have particular auditoriums for our lectures in which every student can accommodate easily. Like if we have 100 students, then they should have like seats of 100 and above 100. So all the students can accommodate easily. वहाँ पे एक अच्छा सा projector and अच्छी बड़ी screen होती from which a teacher teaches us, and also हमको small PPTs present किए जाते. Sir tells us that you should write this particular topic, so we make a note of all the topics, and after completing of that lecture sir mail us or provide us the PPT which sir present to us, so we can take it as a reference for a future work also. So particularly in lecture sir gives a PPT and we have to study that PPT. After that lecture we have our own class in which we study all these things repeated and in a practical manner. So both practical and theoretical, both things are taken into the same part, so we can study well and we can learn all the things about the particular topic. ओके एंड जैसे आपने इतना अच्छा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दिया, तो आपका जो जैसे आपको मालूम है कि भाई कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का पहला जो 3 साल होता है वो प्री क्लिनिकल होता है. इट्स ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. जो लास्ट के फाइनल 3 इयर्स होते हैं वो आपके क्लिनिकल जाते हैं. तो जो इसमें आपका कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है कोर्स वर्क के अंदर, जैसे कि इन नंबर ऑफ इलेक्टिव्स और लाइक टाइमिंग ऑफ द कोर्सेज, अगर आपको जल्दी खत्म करा देते हैं या लेट खत्म कराते हैं या ठीक टाइम पे कराते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है इनका या फिर कोई अलग बात होती है इसमें एग्जाम से रिलेटेड? Basically particular they in the Kazan Federal University they select particular topic for 1 week, like they don't rush for any topics or they don't have any rush regarding completing the syllabus. They complete all their syllabus according to their time. Particularly they select 1 or 2 topic per week, so we can study thoroughly all the topics in a week and then we can give a small test after a week. So we can, like we have to study every day for medicine. Every students I think know that they have to study every day for the medical student. So ये सब चीजें को ध्यान में रख के कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में इस तरह से ही उन लोग ने प्रिपेयर किया है कि बच्चा हर रोज पढ़ता रहे, सो क्या उसको लास्ट में जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. दूसरी बात, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर बच्चा फेस कर रहा है आज के टाइम पे. फॉर एग्जांपल आपके यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं, ईयरली एग्जाम्स भी होते हैं, राइट? यस. सो फॉर एग्जांपल हर यूनिवर्सिटी में हर कैटेगरी का बच्चा होता है. एक मेरिटोरियस स्टूडेंट भी होता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी होता है और एक बिलो एवरेज भी होता है, ठीक है? अब
जो मेरिटोरियस है वो तो अपना रास्ता निकल जाता है बिकॉज ही इज ऑलरेडी ऑन मेरिट एंड ही इज रेडी रीडिंग ऑल द टाइम, सो ही विल डू समथिंग. एवरेज जो होता है वो भी सबके साथ कोलैबोरेट करके कलेक्टिवली अपना थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पढ़ के स्ट्रगल करके जैसा भी वो करना चाहे वो भी आगे निकल जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या करती है वहां पे? सर बेसिकली जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, particularly sir thinks about the below average student more rather than thinking about meritorious student. So sir every time indulge that student in every activity regarding the studies. Sir will tell that student that you should learn that topic, and in next week you have to summarize about that topic and tell everything about that topic to the each and every student present in that class, so he will learn in the at home about all that topic, and here in mind all the topics are running, and after when he also like teach and tell about that topic to all the students, then it will be particular base for that student. Also sometimes sir tells him to study more about that topic. Sir like particularly give more homework and everything to that student, so that below average student came to the average student. Or I can say that sometimes all if the student focus more on that particular topics and do all the things which sir tells him, then he can become like meritorious students also. Okay, and one more question which is very important right now. जो बच्चे बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस में होते हैं और लाइक दे आर फेलिंग इन एवरी सब्जेक्ट्स, यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चों के साथ क्या करती है? बिकॉज इन इंडिया दे आर गेटिंग एक्सपेल्ड these kind of scenarios. वहां पे ऐसा कुछ होता है एक्सपल्शंस? Yes, sir. Basically, in Kazan Federal University, like they give particularly 3 chance about every subject. Like in the first chance, if the student fail, they will take second chance after 2 or 3 months. Again, after 2 or 3 months in the second chance, also student fails, then they will give him a third chance after around 4 or 5 months. And in the third chance also, if he fails the subject, then they will expel that student from the university. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बेसिस, इस साल को एक्सपेंशन हुआ फर्स्ट ईयर से आप में से किसी, आप लोगों के नोन में किसी का? नो सर, अभी फर्स्ट ईयर में तो कोई एक्सपेल्शन नहीं हुआ क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम से कंप्लीट हुआ है एवरी सब्जेक्ट. बट इफ इट कम्स इन माय माइंड, फ्रॉम द इंडियन स्टूडेंट्स नो वन फेल्स इन एनी सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर. Okay. So this was all about like curriculum. Okay, how we are dealing in the curriculum. Now we'll talk about the evaluation part. Like how the test in Kazan Federal University, for example, आप anatomy पढ़ रहे हैं, आप किसी क्लास में जाते हैं, so वहां पे आपका डेली स्ट्रगल कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और कैसे उसको evaluate करते हैं टीचर्स? Yes, if I talk about anatomy, and I will particularly focus on like every system, that is digestive system, respiratory, urinary and reproductive system. So per week the sir will give us a task that in the next week I will teach you digestive system. But sir also tell that you have to study all the topics about digestive system at home. In the next class, sir will first teach us the digestive system. Sir will take all the organs of the digestive system in hand and also teach each and every part of all the organs. Then sir indulge the students to come into activity to take as a to teach the other students. Like if in my case, if I got the stomach, then I have to take stomach on my hand, and then I have to teach all the parts of the stomach and each and everything of the stomach, why this is required, what's the use of this part and everything. On that basis, sir gives mark from 3 in every class. So like in every class we get marks from the 3. After 4 or 5 weeks, when all the systems completed, then we have a small control about 10 marks. So in that all the topics of all the systems will cover, and sir will randomly give 3 or 5 questions. Then we have to explain all that questions, and from the basis of our knowledge and all our things, sir will give us marks from the 10. At the end of the year, after taking all class exams and all control marks, they will give class marks from the 50. And in the end of the year, there will be one small exam of marks 50, out of which we have to basically acquire about 28. Because the passing marks in the Kazan Federal University is 56 out of 100 rather than 33 or 34 like in our country. So students have to score more in class marks also and in exam marks also. Minimum they have to score 28 or above than 28 in both class marks and exam marks. If he don't score in like if he fails to score 28 or more in class marks or in exam, then he will be considered as a failed student and he have to give in the second chance.
Okay, okay. So you want to say practically every day in Kazan is a struggle. Yes, practically every day in Kazan is a struggle, and like I will add one thing also for a medical students. Every day for the 6 year, every day is a struggle for a student, and he has to learn everything. Like new things will come every day, so we have to be updated, and we have to learn each and everything every day, and like in every moment I can say. Okay, thank you so much for this. And one more thing, like now this is in terms of counseling and student support, because every parents is concerned about this specific topic. When you're talking about academics, okay, yeah, like you have been telling me, like university give this chance to support the students or push the students who are not meritorious or below average and they are just struggling with their studies, and the university supports them. What if that you as a meritorious student is suffering in a subject, and for example you do not know a topic in a subject, Yes. and you really want to learn that topic, so what do your system do, or like medical education system in Kazan Federal University, how does they support them? They do Yes. support on an individual level, or do they support on a university level? Like if I consider you as my anatomy sir, then as an anatomy sir you will provide your email address to all the particular student. Basically this thing happen in Kazan Federal University. The particular sir of a particular subject provides his own email id, personal email id, to all the students in the class. Then like I have a doubt on something, like I have a doubt on femur, or I can say humerus bone, so I can mail to the sir that I can't understand the humerus bone properly during the class, sir can you teach me again? So if sir have work, then he will tell I will teach you later, and after some time sir will mail directly that you should, like sir will give us certain things that in humerus this thing goes here, these things is the connection and everything, all that stuff. And if we, again we can't understand anything, then sir will tell that I am free tomorrow, you can come at that time, and at that time sir particularly takes us to the library and take the humerus in hand, and practically he teaches us everything. So from academical point of view, Kazan Federal University and each and every sir of Kazan Federal University helps the students a very lot for improving his own knowledge regarding the particular subjects. Okay, so this is like, for example, you have a problem. For example, you have your friends also who are suffering to the same thing. So Yes. some same mechanics will be applied to them also. Yes, All sir, will for be called every in student, same a mechanics. same time, For and every they will be student. taught. Yes, yes, sir. Okay, wonderful, wonderful. That's actually impressive. And my next question is in reference to your personal problems. For example, if you have a personal problem, then who is there to support you in that matter? Like, does this happen on a student level, or it is on a university level, or is it solved through, or solution will be provided through the consultant level? What is the hierarchy? How this thing happens? Yes, sir. Basically, we are in the Kazan. We are staying in hostel, so our first priority will be our seniors. If we are facing any problems, then we will tell all our problems first to the senior. If the senior can help us, then our problem will be solved. If senior can't help us, then we will go to particular teacher, or we will say to some teachers about this. If teachers also cannot help this, we will go to the university's dean or HOD. So if he or she can help, then they will help us. And at last, we have our own education consultants, that is Softamo, and last we can take help from the Softamo, because they had a connection with some international department, so they can also help us a lot. Okay, thank you for that. And what about financial? Like when it comes to loan, like loan approval in many of the banks. For example, if you want a student loan or like education loan, does this university provide you enough papers to get it approved or sanctioned in India? Yes, so basically if we ask about that, sir, I need some particular fee receipt, or I need some fee invoice including my name and my student ID. So they provide a fee receipt or a fee invoice which we can show to our Indian bank, so they can easily approve our loan, student loan. So according to financial condition, also the Kazan Federal University is helping a lot to all the students. Okay, okay. And one more thing that is just stuck in my mind, because you said ID. So what is this, like we were having sorry, this is in reference to your curriculum topic as well, and evaluation. For example, like I have heard, this is not like completely correct if to be told. I have heard that university provides login ID to the parents as well, so that Yes. they can like check the performance of their student, of their son and daughter.
Is it Yes, true? sir. This is the one of the most important point I can say about the Kazan Federal University, that they provide the student ID with password to the students as well as to the parents. In that we have to log in and we can check all the activities regarding our students. Like if he's what he scores in the marks, there is one point according that name total rating, in which we can consider and we can see all the marks of all the students. Like if my parents wants to see my marks and what and how I am academically doing well or not, then he can log in my account at the home at the kpfu.ru, a site for a international student, and then he can see total rating. In total rating for particular subject, like for anatomy, there will be two sections. One will be class mark and another will be exam mark. So the class marks are also written how much I got, and also the exam marks also written how much I got. And also they after all the exams got complete, they give a particular rating to each and every student, that he got 91.2 rating and rank is 2 at his institution. So each and every student get updated for his students academically. So if some students are telling us that father, I am passed in this subject, or I got good marks, or if he's lying anything, that his own parents can also check his own side. So this is, I think, one of the most important point of the Kazan Federal University, of giving student ID and password. Very nice, very nice. And one more thing that is in the minds of parents these days, like what is the level of diverse community that you actually see, or like what are the different countries students that are studying together in Kazan Federal University in the MBBS curriculum? Like for example, you're in first course. So what kind of communities, what are the different communities that coexist together while reading for the same program? Sir, basically, if I consider diversity, then there is no student from my neighboring countries like Pakistan, Nepal, and Bangladesh. But I got some students from like European countries, some of the like Gulf countries, and I got in particular group. In if I talk about my own group in the first course, or I can say first year, so we are 15 students in one group, but we are only 5 Indians and rest of 10 from the different countries. Some from Gulf countries and some from European countries and some from, I can say, West American countries also. Okay, okay. And one more thing, like you, as you mentioned that we do not have any neighbors. So, Yeah. what do you think, like, when you are studying with so many, how many students, how many Indian students right now you have in your first year? How many Indian students are there? First year, I can say around 40 to 45 students. Okay, okay, okay. And how many Indian students in total are studying in Kazan Federal University MBBS, in MBBS curriculum right now, as per you? Approximations Around, only. I can say around 100 or 120, because I didn't meet with all the seniors, so I don't know. Like I No have issues, no issues. We can totally understand this. yes, So, as per you, like this is our final verdict, and because we have to close this interview, first part of the interview today. yes, So, yes. I just want to ask you one thing, like on your personal note, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपने इसको अपना 1 साल दिया है, आप सेटिस्फाइड हैं वहां पहुंच के, कि आपको अभी भी कुछ डाउट्स है यूनिवर्सिटी पे? No, sir. When I was going there, I have many doubts in my mind. But when my first year completes, I got I'm very satisfied with the Kazan Federal University and all this students and all the teachers. I am also very satisfied. Like all the teachers are willingly to help each and every student for improving in their all the parts of the life, not only academically. If we are say, sir, we are facing problems in like studying, how to study and how can I do this, how can I learn these things. So also sir helps that you should try this method, you should try this method and everything. And about satisfaction, I like to ask my father also that how much he is also satisfied or not. ओके, ओके. सो सर, आपने भी इतना सुना, आपको कैसा लगा? आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर. सर, एक क्वेश्चन है जो आपने मुझे लास्ट ईयर बताया था, लेकिन मैं फिर भी आपसे वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा. आपने सोफ्टामो को कैसे ढूंढा? मैंने सर पहले तो कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की साइट से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली और फिर मैंने वहाँ कांटेक्ट किया.
सर आप कांटेक्ट में आपको कितना दूर आना पड़ा हमसे मिलने के लिए, बिकॉज वी नो दैट यू आर लिविंग अ वेरी एट अ डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंस प्लेस करीब 600 किलोमीटर का डिस्टेंस में। just to get your son enrolled in Kazan Federal University. यस यस सर। So that is typically this is a literally very very much satisfying कि you have made a best decision and I hope कि इसका कुछ बेनिफिट, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा अभी। I hope you are satisfied with the university. एब्सोल्युटली राइट सर, मैं सेटिस्फाई हूँ पूरा यूनिवर्सिटी से भी और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम से और आपका कोऑपरेशन, सभी चीज से मैं पूरा 100% सेटिस्फाई हूँ। मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे सन के लिए मिला। मैं ऐसे तो सोच रहा था कि मैं उसको रिपीटर रख दूँ और नीट में अच्छा स्कोर करने के बाद सोचूं, लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम वो जो रिपीटेशन का डिसीजन नहीं लिया और ये डिसीजन लिया, वो बेटर लग रहा है मुझे अभी और 100% में सेटिस्फाई हूं। सर और जैसे आपको पता है कोरोना टाइम्स चल रहे हैं एंड वी आर सफरिंग थ्रू दिस कोविड सीन, सो अभी बच्चे का जो क्लासेस है वो कैसे मैनेज हो रहा है? Like is he not studying because the university is going offline and something happening, or like online कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है यूनिवर्सिटी ने बच्चों के लिए? 100% अभी ऑनलाइन चल रहा है। 1 सितंबर से उसका सेकंड ईयर का 3rd सेम स्टार्ट हो गया है, वो भी ऑनलाइन चल रहा है। तो कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं वो ऐसा फेस नहीं हो रहा, अभी पर्टिकुलर चल रहा है। और ऑनलाइन सिर्फ क्लास ही नहीं चल रहा है, उसको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, उसको प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी लिंक चाहिए, वो सारी चीज़ वो मेल में आ जाती है और स्टूडेंट को एवरीडे उसका एक एक्सरसाइज भी दिया जाता है, वो उसको सबमिट करना रहता है। तो पर्टिकुलर स्टडी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में देखो सामने आमने कुछ बात हो गई, ऐसे घूमते फिरते बात कर ली, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर स्टडी सिस्टम से स्टडी चल रहा है। ओके एंड सर वन मोर थिंग, लाइक अभी जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है अभी, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया से ही पढ़ रहा है, तो आपको कभी कोई इंटीमेशन मिला है कि व्हेन द क्लासेस will start on an offline medium, या अभी भी इस पे पॉज है because of government has not started initiating this step to bring back all the students to Kazan? कुछ आप लोगों को इंटीमेशन मिला है इस रिगार्ड में अभी तक? नहीं, कुछ नहीं मिला है इंटीमेशन। Okay, and the student is in touch with the university at all times, right? Yes, right, sir. right, yes sir. Okay. So let's hope कि हम एक नया इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जिसमें हमारे टॉपिक्स कुछ अलग होंगे एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आयुष उसका पार्ट है हो, एंड we'll have some more students and more parents so that they can collectively share their knowledge कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कजान में, in reference to hostel, in reference to mess जो कि वहाँ अवेलेबल नहीं है, so he is cooking on his own, I know. Yes. So एक नया एक्सपीरियंस लाइफ में मिल रहा है उसको। So इसके बारे में और ऐसे कुछ नए नए टॉपिक के बारे में we'll have a deep discussion in the next interview. Thank you so much for your support and we are truly grateful for the honors. Okay sir, thank you so much sir. Thank you both of you and all the very best for your second year, Ayush. Yes, sir. Thank you sir. Okay, And thank you, I'm so sir. very thankful that you are also helping me a lot during the whole year. If I have some doubt, if I ask you at any time, you reply me and you are providing that you should do this and do that for my academics. So I am also very grateful and thankful that I got a nice sir from the consultancy, so I can give my best for all the 6 years. Thank you. And I hope I am in touch with you all the 6 years and also after my completing medical. Definitely welcome to the group, bro. Welcome to the group. We'll have a good time. Okay. Thank you. Have awesome time. Have a great time with your family. Okay. We'll conduct the next interview and we will call you in that. Thank you for showing your interest and this initiative will help a lot of students and that's what we suppose. Okay, that's what we are assuming that will help a lot of students. Thank you for your support and good day, goodbye and God bless you. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye. Have a nice day, sir. Same to you. दोस्तों आपको आज का ये जो सेशन था हमारा वो शायद पसंद आया होगा। काफ़ी सारी हिडन फैक्ट्स जो जान नहीं पा रहे थे आप, वो यहाँ पे आपको जानने को मिली होगी। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट स्टूडेंट के वीडियोस इन फ्यूचर लाते रहेंगे। जैसे ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, नेक्स्ट वीडियो में भी शायद हम लोग सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट के साथ लेंगे। मीन्स हर एक स्टूडेंट के थ्रू, मे बी उनके पेरेंट्स के थ्रू हम लोग उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा, काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और इसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज
हमको कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप मैसेज कर सकते हैं। एवं हमारा जो चैट सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे जाके चैट पे जाके भी आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन को भी कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एवं अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।